Vanakkam, Vandanam, Namaste, Namaskar, good evening and welcome to Postmodern. Enlightenment begins here, only on Radio on a Flight of Life. Dear all, this is Bala Nagendran live from Chennai. Has come with an impartial analysis and to dissect an important issue to release the Postmodern reports of this Thursday between 8 to 9 p.m. That's why this is the most enlightening show on radio, only on Radio on a Flight of Life. Postmodern enlightenment begins only here with Bala Nagendran, with Radio Udaan, with Postmodern on every Thursday to 9 p.m. This is the place where you can get yourself enlightened. That's why we maintain neutrality, factual clarity, conceptual, concrete, concise exposure of informations. June 30th, 2016, Thunderous Thursday has come with another important issue which the nation is facing, and also it determines the stability of our nation on the world arena. The international community is also keeping its eye on this action. So, this is not only nationally important but internationally inevitable imminence. We're going to see a nonchalant constitutional or nonchalant financial body that determines India's financial stability. It also maintains its own autonomy. In fact, it has gone to conflict in the recent periods with the government itself. Many of you might have guessed what I'm talking about. We are going to dissect that entity tonight. We are going to reveal the secrets hidden behind the curtains and what this institute is all about, how it has created, what are the extraordinary facts that you might not have come across. So listeners, keep listening to Radio Udaan, stay tuned to Radio Udaan, enjoy Radio Udaan, a Flight of Life. Go to www.radioudaan.com and find the links, submit feedback, select the show Postmodern with Bala Nagendran and rate the show according to the choice that you will find in your mind after 9 o'clock tonight. If you're listening to Postmodern of mine of today, go to www.radioudaan.com to find the link, submit feedback, and to rate, select the show Postmodern with Bala Nagendran. Rate the show from the choices that will be in front of you in the combo box. Excellent, very good, good, okay, poor will be the choices in front of you. The choice that we'll make will help us to open the door of success and the better progress of future Postmodern. So go to radioudaan.com and put your valid thoughts, suggestions, ideas for the betterment of your most enlightening show. You can also download the playlist to listen to Radio Udaan. You can also make sure that you are playing a pivotal role in the development of Radio Udaan. Most of all, if you want to be the closest to Radio Udaan as an RJ, you have the opportunity. First come, first serve basis. Limited opportunities are available. So go to radioudaan.com and find the link. Interested to become RJ. Fill up the form with mandatory items and we will approach you. If things are fine according to the criteria of Radio Udaan, you will be listened across more than 100 countries and your eardrums you will kiss the eardrums of more than 20,000 listeners per month. That's awesome. It is awestruck experience to be with Radio Udaan. So experience what we have been experiencing for the past 2.5 years, day to day, day in and day out, the journey to jollity, the voyage to veracity. Your Flight of Life, Radio Udaan, is looking forward to your entry if you are interested to make your voice to be heard across the globe. So friends, as I've said today, we are going to dissect a financial body. If you look into the mood text of Radio Udaan's Skype ID, you might have come across the answer. If you haven't added us in your Skype, do add us in your Skype. Our Skype ID is Radio Udaan, RADIOUDAAN. RADIOUDAAN is our ID, and go add us. Text your contents.
I would be glad to read your name and the contents on air. If you are interested, your contents to be read, and you can also interact with the RJ at the time of their favorite show, for instance. If you are listening to Postmortem right now, if you want to interact with me, you can interact with me right now. I would be glad to interact with you as well. So today, we are going to see one of the major entities that determines Indian economic positions. It controls and stabilizes inflation. Most importantly, it determines what sort of money or validation of monetary unit that we should use. It has functioned for Pakistan and Burma temporarily. Although it was a pre-independent entity, at that time it was in the hands of shareholders. After independence, it has been nationalized, and now it occupies the top position in the pyramid of Indian financial system. It frames one of the famous policies to govern and control the monetary position of the country. It occupies one of the greatest non-governmental entity and even enters into persuading the governments. That is one of the famous entities, but its first governors were from the British. It in fact holds the largest service provider accolade in the world. It is one of the eyeing entities, the entity that is eyed by the international community thanks to the growth of India. Recently, it is getting popularized in the newspapers. We are going to see what is happening, its origin, how it has come into the frame of the most vital, top financial entity of the nation. What are all its functions? But at the same time, we are going to see what the government has proposed to incline its policy with this entity's policies to avoid diversions. How far that has created the conflict of interest, and how far the government has done its best to neutralize things and propose a new policy. We are going to talk everything tonight only on Postmortem with me, Bala Nagendran, live from Chennai. You are listening to your most enlightening show where we are dissecting an issue. Nowadays, most of the topics are confusing. Many reports, many channels, many conceptual interpretations, and many facts. To avoid all the hindrances of knowledge, Radio Udaan has come with Postmortem, that too with Bala Nagendran on every Thursday 8 to 9 p.m. Now, to provide you the relevant, wanted, necessary, and importantly, true informations. Stay tuned to Radio Udaan, keep listening to Radio Udaan. We'll tell you more in the next link. We are going to dissect the most top financial body of India. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई है ना,
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिम्पल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिम्पल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYR यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी फिर मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद RJ धड़कन ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Reserve Bank of India, the bankers' bank of the country. Reserve Bank of India, RBI, simply known as the bankers' bank of the country because it deals with the banks and the banks in turn deals with us, the customers. But we, in fact most of us,
have little awareness about what this RBI does. That's why we have come here today to talk about RBI. The reason behind for us to talk about RBI is the government's latest proposal to move constitutional treaty to frame monetary policy committee. The MPC, Monetary Policy Committee, that's going to be performed or established by the government, is going to have the representatives of the government to determine the government's RBI's monetary policies that's not going to violate or interference with the government. It has already been passed through Indian Financial Code 2015, but there was a conflict of interest between RBI and the government. Hence, the government has been forced to withdraw that proposal, and the government has come with a new proposal with modifications. We are going to see everything tonight, what that modification is all about, what that fact that has created the conflict of interest. In the gamut of financial entities, RBI is an important element. We are going to see from the origin till what had happened till date, with the features and the special functions that the RBI performs. Well, RBI was established in the year 1935, April 1st, 1935, under the RBI Act, Reserve Bank of India Act 1934. Let's not get confused that it has been established under the Government of India Act of 1935. That's not the reality. RBI was established in the year 1934 based on the Act of 1934, and it became into action in the year 1935. James Taylor happened to be its first governor, and the current logo of RBI was extracted from the East India Company. So still, there were colonial presence in today's RBI as well. Initially, it was established in Kolkata. In the year 1947, it has been commuted to Mumbai, where it is still located as the head office of Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India functioned as a public limited company, even not as a bank. That was a public limited bank. What is the difference between a public limited bank and the current RBI? The public limited bank has to distribute its capital in the form of shares, and the people who purchase share will become shareholders. Indirectly, they will decide the whims, and according to the whims of the shareholders, the company has to dance to the tunes. In fact, the shareholders will determine who will be the board of directors, who will be the CEO, COO, governor, and so forth. In the year 1935, the share capital worth for Reserve Bank of India was rupees 100. Don't think that is small, because in the year 1935, 100 was a huge amount. Since then, RBI has functioned as a public limited company or an entity till 1949. That's where the Banking Regulation Acts were passed and the nationalization of Reserve Bank of India took place. But before that, we need to talk some important aspects of Reserve Bank of India. Do we know that India's Reserve Bank of India has served as the Reserve Bank of Pakistan and Reserve Bank of Burma, and today's Myanmar? Let's know more on the Reserve Bank of India in the coming link only on Radio Run of Flight of Life. You're listening to Balanagandran on your most enlightening show, Post Mortem. कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी, तो कभी इंतजार। ये मर्ज भी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का, या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, फिकर नॉट, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज।
अब से हर शनिवार रात 8 से 9 नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा अजय स्नेहा ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही। सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। नैब इंडिया एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत।
और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। As we have been seeing about RBI's origination, from 1937 onwards, although Myanmar got independence, it had requested the Reserve Bank of India to see through its monetary units as well. Hence, till 1947 to 48, the Reserve Bank of India served as the central bank for Pakistan and Myanmar as well. This is a unique feature of a country's central bank to function as another country's central bank. That's how India's Reserve Bank of India functioned. And the first governor of independent India happened to be a British. However, there in 1948, Chintaman Dwaraka Deshmukh, C.D. Deshmukh in simple terms, has been appointed as the first Indian governor of Reserve Bank of India. In his period, the shareholders' hands have been reduced and the government taken the bank under its custody, which was deeply opposed by the then governor C.D. Deshmukh. The government has taken the bank under the state control under the Banking Regulation Act of 1949. Hence, deep down functions have been drafted for Reserve Bank of India. That's where to issue currency notes have also been added. RBI has to perform several functions, even including moral suasion. Moral suasion is equal to persuasion morally to those who disagree with the policies of RBI. Whenever we speak about policy, Radio Udaan comes into the picture. That's why slip of the tongue. And RBI also holds another unique feature, that is RBI logo possessed lion and palm tree till 1948. After the Indian governor has sworn in, the logo has been changed from lion to tiger or panther. Now the panther, the palm tree, is there as a logo of RBI. The RBI governor enjoys a lot of perks. One of them is the famous residential bungalow at Colonial Marg in Mumbai, in between the two extremes of India. On the left side, it is full of riches, industrialists, the ferrying silver spoon, elite class people. On the right side, the vice versa, the poor slum. In between, the governor's residence is located. And the head office is in Mumbai. It has major regional branch offices at Chennai, New Delhi and Kolkata respectively. As of now, it has its branches in all 29 states. Most of them are in state capitals. Reserve Bank of India has functioned with more autonomy since 1949. However, many banks were under the private control. For example, the Imperial Bank, the Imperial Bank, which has then called as State Bank of India and so forth. Not deeply under the private control, but under the control of the shareholders. And here comes then Prime Minister, the Iron Lady Indira Gandhi, the year 1969, and nationalized 14 commercial or public sector banks. That was a revolutionary step which has widened the borders
of Reserve Bank of India. What about the functions? And do we know that from 1954 to 1978, Reserve Bank of India was circulating 5,000 rupees and 10,000 rupees notes? We have seen 1,000 rupees note at present. But have we seen 5,000 and 10,000 rupees notes? 1 note is equal to 10,000. Wow. That was there. What happened? Where is it now? We'll tell you in the next link only on Radio Udaan of Light of Life with your Bala Nagendran. You're listening to Postmodern. Enlightenment begins here. रेडियो उड़ान पर मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से? जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप या फिर किसने किसको किया है टेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 p.m. and rebroadcast every Sunday 2 to 3 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। चंद पुराने नगमे। कलाकारों के जीवन की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी न सुनी हो। जी हाँ, दिलीप साहब के साथ मैंने कोई 3-4 फिल्मों में काम किया है, मगर उनके साथ किसी संजीदा फिल्म में काम करने की हसरत ही रही। मैं आपका दोस्त संजीव गांधी और आप मिलके बनाएंगे एक गुलदस्ता, जिसे आप सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 8 से 9 और हर मंगलवार दोपहर 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।
While we are talking about 1969 nationalization of 14 banks, we need to talk about another important fact which we might have not come across. Since the beginning till 1947, there was a circulation of rupees 5,000 and 10,000 notes. And in the year 1947, they have been demonetized. Demonetized in the sense cancelled from printing. And again, in the year 1954, those two notes of rupees 5,000 and 10,000 have been reinstated into circulation, and in the year 1978, they have been demonetized. They have been considered to be of more and more reason behind illegal currencies, fake currencies. Hence 1978, that has been demonetized. The Reserve Bank of India has gone into the step of renaissance through revolutionary steps since 1970s and 80s. Again, when in the year 1980, the then Prime Minister I.M. Lady Indira Gandhi returned to power, she has nationalized 6 more banks to add more into the kitty. Now, we have as many as more than 25 to 28 nationalized banks, and the largest public sector bank known as the State Bank of India and RBI functioning across several spheres and also playing a pivotal role in making Indian economy inevitable to be sidelined by the other forces of the globe. Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India, was the only RBI governor who went on to become the Prime Minister. He has been the governor of RBI from 1982 to 1985. Even that was the period where India and its central bank functions have begun to widen. The major functions of RBI, features of RBI, is to issue and regulate the currency notes, or to regulate the issue of currency notes. In the year 2014, we all have heard a notice from Reserve Bank of India stating that all the notes printed before the year 2005 should be exchanged with the bank as they are going to be invalidated. These sort of regulations are the key feature. Even the union government have no say in the matter. The Budget Responsibility and Management Act of 2006 has stopped printing of currencies due to deficit financing. But in the year 2014, a new notification stating invalidation of the currencies before 2005, considering the security reasons, have given a jostle to reprint the currencies. These new form of currencies have more security features. Even the currencies have bleak lines. The lines are named as bleak, which can be understood by touching the lines by those who are print impaired. Every currency has an Indian symbol, like any scenery or any region, like Andaman Islands in 20 rupee notes. The notations or the value of the rupee is printed in Hindi and English, French, and at the back there were all 22 authorized languages. The signs of the fiat money, that is the money that is printed, will be of the governor of RBI, and the coins that are minted by the government will have the sign of this financial secretary. The minted coins like 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins are known as government money because government produces it, government mints it. But the other currencies are printed by the RBI, like notes of 10 rupees, 20, 50, 100, 500,000.
K.G. Udeshi, the first female deputy governor of RBI and the first woman to enter into the top brass of the nation's top financial entity in the year 2003. The current governor was the famous economist Dr. Raghuram Rajan, whose term is going to end in the year of September, and 4 out of which 3 are from the Reserve Bank of India itself, and the 4th one happened to be the current SBI, State Bank of India's chairperson, Arundhati Bhattacharya, are on the fray to be uplifted towards the coveted post of determining India's economic stability. But in the meantime, the government and the RBI had difference of ideas in maintaining monetary policies to maintain inflations, and the government tried to persuade RBI trying to persuade the government. Things have happened so far so good. RBI has taken various measures to stabilize the economy. Repo rates and reverse repo rates have been released quarterly. Reverse repo rate has been fixed at 1 basis point, 100 basis point less than the repo rate. Marginal standing facility has been inducted. More functional activities have been granted to the commercial banks. RBI has also signed Forex reserve of currencies with Japan, Russia and South Africa. And thus, RBI is ensuring its Forex reserves and maintaining that there won't be the incident of 1991 Forex collapse. As we speak, the government has proposed to establish a new monetary policy committee with some changes. Currently, the RBI has the complete jurisdiction and discretion over monetary policy. Let's not get confused. RBI produces monetary policy and government of fiscal policy. Fiscal policy talks about the revenues and expenditures. Monetary policy talks about how the money, liquidity, expenditure, the rate of interest, and many issues that pertains to inflation and maintaining the currency value are governed. RBI had a complete say in it. The board of directors of Reserve Bank of India comprises of RBI governor, 5 deputy governors, 10 board of directors elected by the RBI and the government. The government and the president appoints the governor of RBI, who enjoys the term of office of 3 years. That's how Raghuram Rajan's term comes to an end on September 4th, 2016. And thus we have come to an important aspect of Reserve Bank of India. As we have been seeing some interesting issues about Reserve Bank of India, we need to note about what the government proposed with regard to Monetary Policy Committee. Why the conflict has risen, what the government had to say, what are the changes that the government has made. We'll tell you in the coming link on Radio Udaan. You are listening to Postmortem with me, Bala Nagendran. Enlightenment begins here. आलू है, गोभी है, मटर, टमाटर। आलू है, गोभी है, मटर, टमाटर बाबूजी एकदम बढ़िया ताजा है। सेब है एकदम मीठा सेब बाबूजी, एकदम मीठा सेब ले लो। अरे बाबूजी सेब ले लो, सेब एकदम मीठे हैं, बढ़िया एकदम। ले लो बाबूजी। अरे भैया ये सेब क्या भाव दिए? अरे बाबूजी ले लो, 120 रुपए किलो है। अच्छे हैं? अरे एकदम बढ़िया बाबूजी, कश्मीरी सेब हैं। अच्छा अच्छा, 2 किलो दे दो। दे रहे हैं बाबूजी अभी। ले बाबूजी। अरे रे रे, 1 मिनट, तुम इन्हें पॉलीथीन में क्यों पैक कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक होती है, क्या तुम्हें पता नहीं है? बाबूजी ये कैसे? देखो,
जब हम इन पन्नियों का यूज करते हैं तो इसमें रखा सामान खाने योग्य नहीं होता। दूसरा, जब हम इसे फेंकते हैं तो पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। पानी में डालें तो पानी को भी दूषित करता है और साथ ही साथ हमारी नन्ही नन्ही मछलियां इसमें फंस जाती हैं, जिससे उनका दम घुट जाता है। या फिर हम इन पॉलीथीन बैग्स को जलाएं तो उससे निकलने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी स्वच्छ वायु दूषित हो जाती है। तो ऐसी खतरनाक चीज का हम उपयोग क्यों करें भला? सही कहा बाबूजी आपने। अब हम कबहू ना प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करीब। अब तो हम हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करीब और पन्नी का भी इस्तेमाल नहीं करीब। दोस्तों, ये तो समझ गए और आप नहीं समझे तो समझ जाइए। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Visit on www.radioudan.com। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 7 days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible and tantalizing events. Everything will be enveloped in 60 minutes only on Radio Udaan. World this week, a bob on the globe. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World This Week with Bala Nagendran on every Sunday 8 to 9 p.m. which will be rebroadcasted every Monday 3 to 4 p.m. World This Week, a bob on the globe. आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK।
डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome to the last segment of Postmortem Enlightenment begins only on Radio Udaan of Light of Life with me, Balanagandran, where we are dissecting Reserve Bank of India. As we have been talking about, we need to know about what is this Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee is acting to frame monetary policy, as we have known in the last link, which is under the complete control of RBI. But the government has decided to include and to make some changes. Hence, in the year 2015, through Indian Finance Code IFC 2015, the government of India has issued the notification stating that there will be 7 members in that committee, 4 will be nominated by the government. And the 2 votes, if the 2 votes of the 7 has the diversion, the decision has to be sent to the government. These sort of restrictive measures have been completely opposed by RBI. We can understand why the RBI has opposed this proposal. And the government has withdrawn the proposal, and this year they have come with another inclusion. That is, 6 members will be there in the committee, 3 will be appointed by the Reserve Bank of India, and 3 will be nominated or appointed from outside Reserve Bank of India. Out of the 3 who are appointed by the Reserve Bank of India will be governor and one deputy governor who is responsible for monetary policy, and another third person who are appointed by the board of directors of Reserve Bank of India. The rest of the 3 outside Reserve Bank of India would be from the eminence of economic, finance, trade and commerce. And thus, the government has sought to maintain a sort of neutrality. Finally, the government has kept that if there is a policy diversion from the government may send its suggestion to RBI. The government hasn't withdrawn from that only. So with the government neutrality, we end our neutrality that we kept with RBI by concluding today's post-mortem. Feedback us on www.radioudan.com. How do you feel about the show? What are the things that need to be incorporated for the better progress of post-mortem? I'll meet you all on the Sunday 8 to 9 p.m. on your most informative show, World This Week, where we are going to envelop the little snapshot of what happened across the globe in the 7 days. And next Thursday 8 to 9 p.m., I will come with another impartial analysis to provide you the post-mortem report. Till then, Balanagandran is saying, take care of yourself. If possible, take care of others. Good night. Buenas noches. Vanakkam. बरखुदार, ये जो फैन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फैन जिसके चक्कर में
15 अप्रैल फैन मूवी शाहरुख खान की और मैं ना देखूं, इम्पॉसिबल। रेडियो उड़ान पर फैन की पलटन यानी कि मेरी पलटन, आपने सुना क्या? रेडियो उड़ान प्रेजेंट जबरा वाला फैन। हाय डियर, दिस इज अंकिता और मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी वाली जबरी वाली फैन हूँ, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी पसंद है और मुझे पूरे के पूरे शाहरुख बहुत पसंद है और मैं उनकी ये वाली मूवी जरूर देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं उनकी जबरी वाली फैन हूँ। हाय, दिस इज पार्थ सुंदरा फ्रॉम गुजरात, बड़ौदा से। मैं आईडी बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन, ये सब मुझे बहुत प्यारी लगती है और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं उनका बहुत 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 बड़ा जबरा वाला फैन हूँ। हाय, मैं हूँ शालू और मैं अजय देवगन की जबरा फैन हूँ, क्योंकि मुझे उनके स्टाइल, एक्टिंग सब बहुत पसंद है और उनका जो मेन शायरी बोलने का अंदाज है वो तो बहुत अच्छा लगता है। हाय, मैं अहमदाबाद से गुजरात से पार्थ बात कर रहा हूँ। अगर फैन की बात हो रही है तो मैं शाहरुख खान का जबरा वाला फैन हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की जो भी मूवी आती है वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है और उसके जो एक्टिंग करते हैं वो भी एक्टिंग बहुत बढ़िया होती है, जिससे मैं शाहरुख खान का जबरा वाला फैन हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि लखनऊ से और मेरे फेवरेट हैं सबके फेवरेट सलमान खान। मैं हूँ उनका सबसे जबरा वाला फैन, क्योंकि उनके स्टाइल, उनका लुक्स, उनके डांसिंग, उनका एक्टिंग मुझे सब कुछ बहुत पसंद है और वो सब कुछ जबरदस्त है। वो सच रियल बीइंग ह्यूमन है। मैं हूँ सलमान खान का जबरा वाला फैन। हेलो एवरीवन, तो मैं यानी कि डेविड जोशी का जबरा वाला फैन और कोई नहीं, हमारी सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी आरजे धड़कन यानी कि आप ही हमारी सबसे वाला जबरा वाला फैन हो, क्योंकि सच में जब से मैं आपको सुनता आया हूँ आपसे सबसे बड़ा फैन हो गया हूँ, क्योंकि आपके जो बोलने का अंदाज है, जो आपका आवाज की कमाल है, पर्दे के पीछे रहकर भी जिस तरह आप ऑडियंस को पकड़े रहते हो, तारीफ काबिल है और इसी अंदाज पे तो मैं फिदा हो गया हूँ। सो डेविड जोशी का जबरा वाला फैन आरजे धड़कन। खातिरदारी में कमी नहीं छोड़ेंगे, आपकी ख्वाहिशों को सर आंखों पे रखेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, बाकी सब कम है। तो बरगुदार अपने कानपुर के स्पीकर का वॉल्यूम और आंखों के पिक्सल का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं यानी आरजे धड़कन लेकर आ रही हूँ जबरा वाला फैन इस शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे ऑन एयर रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ।